आज के वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के लिए हमें सबसे पहले लाइन की इक्वेशन रिकॉल करनी होगी। कुछ फैक्ट्स हम रिकॉल कर लेते हैं। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन द पॉइंट ऑन द लाइन एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज नोन टू अस? इट इज y minus y1 equals to m into x minus x1. And what is the slope of a tangent to the curve y equals to fx at x equals to a? So your obvious answer is slope of tangent at x equals to a is f dash a. So you have the slope of tangent is f dash a, that is your m. So in that case the equation of tangent will be y minus fa equals to f dash a into x minus a. As we have x equals to a, y equals to fa. Now we proceed with the question number 9. We have in question number 9 we have a curve y equals to x cube minus 11x plus 5 and it has the tangent y equals to x minus 11. To find the point of contact. Solution: we take the, let assume that the point of contact is h comma k. Now what is the slope of the given tangent? With by comparison this with the standard form y equals to mx plus c, the slope of given tangent is 1, while slope of any tangent to the given curve is, how to find out slope of any tangent to the given curve? For that we need the derivative of this equation. So differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx equals to 3x square minus 11. So slope of any tangent to the given curve at h comma k is 3h square minus 11. Now the slope of the tangent is 1 and the slope of the tangent is 3h square minus 11. Therefore we can conclude that 3h square minus 11 equals to 1, and on solving this we get h square equals to 4, and that gives you h equals to plus minus 2. Now other coordinates, this is x coordinate, so at h equals to 2, k is equals to 8 minus 22 plus 5, so it is minus 8. At h equals to minus 2, k is equals to 19. Therefore required points are 2 comma minus 8 and minus 2 comma 19. So next question, we will go for the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन कर्व है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1, और हमें फाइंड आउट करना है वो पॉइंट्स कर्व के ऊपर जहाँ पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है केस 1 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस है केस 2। हमने अज्यूम किया लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एच कॉमा के
बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व के ऊपर भी लाई करता है, तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह हम h पुट करेंगे, y की जगह k पुट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स दिस इक्वेशन वी गेट 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 इंटू dy by dx equals to 0. So what is the value of dy by dx? dy by dx is minus 2x upon 9 multiplied with 16 by 2y, and that is finally minus 16x upon 9y. We also need the equation slope of the tangent at h comma k. So therefore slope of the tangent at h comma k is given by h comma k, that is minus 16h upon 9k. This is the slope of the tangent. Now case 1, if the tangent is, this is your slope of tangent, at h comma k. Now if tangent is parallel to x-axis, if tangent is parallel to x-axis, then we have dy by dx at h comma k equals to 0. Then the slope of the tangent will be 0. That means minus 16h upon 9k equals to 0, and that gives you h equals to 0. When we put this h equals to 0 in equation 1, we get 0 plus k square by 16 equals to 1, and that gives you k square equals to 16, and that gives you k equals to plus minus 4. Therefore required point of contact are 0, 4 and 0, minus 4. Now let us continue second part. If tangent is parallel to y-axis, in this case the slope of the tangent will be tan 90 degree. Tan 90 degree means sin 90 upon cos 90, and that means 1 upon 0. That is the slope of the tangent, and also we know that the slope of the tangent is minus 16h upon 9k. So this will be equals to minus 16h upon 9k in this case, and this gives you 9k equals to 0, that gives you k equals to 0. Now putting this value k equals to 0 in equation 1, we will get h square by 9 plus 0 equals to 1. So you will get h equals to plus minus 3. Therefore the required point of contact are 3, 0 and minus 3, 0. That's the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें हमारे पास एक कर्व गिवन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इसमें y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, ऐसा कंडीशन गिवन है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हमें ढूंढने हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is h comma k, because this is the point of contact, therefore it will satisfy the equation of curve. Therefore
we have k equals to h cube. This is first equation. Now we start with the equation of the curve y equals to x cube. On differentiating both sides with respect to x, we will get dy by dx equals to 3x square. Therefore, slope of tangent at h comma k equals to dy by dx at h comma k, that is equals to 3h square. According to question, it is given to us that the slope of the tangent is equals to the y coordinate. And what is the y coordinate? Y coordinate is k. So according to question, it is given to us 3h square equals to k. And what is k equals to? K equals to h cube. So in place of k, we can substitute h cube from equation 1. On solving it further, h cube minus 3h square equals to 0. H square is common, h minus 3 equals to 0. You have either h equals to 0 or h equals to 3. Therefore, the required point of contacts are 0, can find the use of this first equation 0, 0, and if you put h equals to 3, it is k equals to 27 and 3, 27. So these two are the point of contacts. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 18. इसमें गिवन है हमारे पास कर्व 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5. हमें ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स फाइंड आउट करने हैं इस कर्व के ऊपर सच दैट उन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएंगे वो ओरिजिन से पास करें. तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर h, k. सो बिकॉज ये कर्व के ऊपर और टेंजेंट के ऊपर दोनों के ऊपर लाई करेंगे, देयरफॉर कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. Therefore, we have k equals to 4h cube minus 2 into h to the power 5. This is the first equation. Now we again start with the equation of curve 4x cube minus 2x to the power 5. Differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx equals to 12x square minus 10x to the power 4. Now, tangent, slope of the tangent at h comma k is given by dy by dx at h comma k, and that will be 12h square minus 10h raised to the power 4. We have slope of the tangent and we have a point on the tangent. Therefore, equation of tangent is y minus k equals to 12h square minus 10h to the power 4 into x minus h. This is the equation of tangent. It is given to us that it passes through origin therefore origin will satisfy its equation. In place of y we substitute 0, in place of x we substitute 0. After opening the bracket, it is minus k, whether minus we can cancel minus from both sides, 12h cube minus 10h to the power 5. Now it is from equation 1 we can substitute the value of k. So it is 4h cube minus 2h5 equals to 12h cube minus 10h5, and this substitution is being done from equation 1.
Solving it further, we will get 8h to the power 5 minus 8h cube equals to 0. 8h cube is common. We left out with h square minus 1 equals to 0. This gives you either h equals to 0 or h equals to plus minus 1. Because h square minus 1 is h minus 1 into h plus 1, that gives you plus minus 1. At h equals to 0, we can evaluate the value from equation 1. H equals to 0, k equals to 0. At h equals to 1, k is equals to 4 minus 2, that is 2. At h equals to minus 1, k equals to minus 2. Therefore, required point of contacts are 0, 0, 1, 2 and minus 1, minus 2. Let us go for the next question. Next question हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 23rd. यहाँ पे हमारे पास दो कर्व्स हैं x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल्स टू के, और हमारे पास गिवन है 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1. हमें प्रूफ करना है कि द कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. तो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. कर्व्स अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? दो कर्व्स राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यानी कि जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट पे जो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. तभी हम कहेंगे कि द टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, अदरवाइज इट इज नॉट. तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करने के लिए टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ड्रॉ किए गए हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. सबसे पहले हम इस कर्व की इक्वेशंस को लेते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं. फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट we solve equation 1 and 2. We have three things given in the equation. So we will get y cube equals to k, and this gives you y equals to cubed root of k, and on substituting this value of y in this, we will get x equals to k raised to power 2 by 3. Therefore, intersection point is k raised to the power 2 by 3, k raised to power 1 by 3. Now we take the curves x equals to y square, differentiating both sides with respect to x, we will get 1 equals to 2y into dy by dx. So dy by dx will be equals to 1 upon 2y. The slope of tangent to the curve at this point, k is raised to power 2 by 3, k raised to power 1 by 3, is equals to 1 upon 2 into k raised to power 1 by 3. Let us consider the slope of the first tangent as m1. For the second curve xy equals to k, on differentiating both sides we get x into dy by dx plus 1 into y equals to 0. So dy by dx is equals to minus y upon x. Therefore, slope of tangent at intersection point is given by minus k raised to power 1 by 3 upon k raised to power 2 by 3, and that will become minus 1 upon k raised to power 1 by 3. Let us consider this slope as m2. Now we have to prove that m1 into m2 equals to -1. So let us start with m1 into m2.
So m1 into m2 is 1 by 2 into k raised to power 1 by 3 into minus 1 by k raised to power 1 by 3. It gives you minus 1 upon 2 into k raised to power 2 by 3. You can write it down as minus 1 into 2 into k square whole raised to power 1 by 3. So k स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास k स्क्वायर 1 by 8 आएगा. k स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 by 8 का क्यूब रूट. 1 by 8 का क्यूब रूट हमारे पास 1 by 2 होगा एंड फाइनल आंसर इज माइनस 1. ये 1 by 8 हमने सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम इक्वेशन 3. So because m1 into m2 equals to minus 1, therefore tangents are perpendicular and therefore curves intersect at right angle. So that is for today. Thank you very much everyone for watching the video.